Hello, hello. Welcome back to another episode of It's Game Week. This is Pavan along with Nilesh, and again here to discuss our opinions and thoughts and rest of our thoughts on Premier And League Bakwas. and Bakwas Mhm. on Premier League matches and rest of the matches that we are interested in. What's up, Nilesh bhai? Hey, Vamsi, what's up? Badhiya. All good, yaar. It was a relatively easy week after Diwali, both Mm, in terms of life and football. So indeed. yeah. How does it feel? 5-0. Oh, You got it feels really good. It feels really good because after a couple of patchy games and a loss against PSV Eindhoven Europa. in the Europa League game, Mm, it was kind of a marker against a team with just one against Liverpool. You know, their confidence was beaming. They played one of the best teams in Europe and won against them 1-0. right. They they you know they were flying high. They came to the Emirates Stadium. The first half was kind of a little jittery because it was the same story. We had scored only one goal, Mm, and the fans have started getting impatient that it might be another story, just like Leeds or Southampton, where they might come back in the second half. But it was not. The right. moment the half started, the second goal went in. It was again easy peasy. But the only downside to the entire match was that Saka got badly injured. It's mostly a knock, as what the Mm. manager suggests, but we just hope that he's back for the Chelsea game this weekend. Okay. It reminds me of injury out of context, but I think Pogba is out of the World Cup. Man, And I think there are some players who are just paid to be injured. Pogba is one of them. did he even And play a match for Juventus? I don't know. no, I haven't heard he hasn't played a single official game for Juventus. I Juventus. mean, Oh, how God knows, yeah. that's sad. I was I Pogba reminds me of Callum Wilson. You know Callum Wilson from Mm, Newcastle, the striker. yes. Mm, Um, he is also a similar kind of a player who needs to be covered up in bubble wrap and kept, just to make sure that he does not get injured. His entire week is managed very precariously, right. and um, I Bale. think they preserve him in liquid nitrogen and just unleash him on Saturday or a Sunday morning. Yeah, ऐसे कुछ लोग Yeah. हैं जो मतलब they are very like made of glass, like they get injured very quickly यार if ऐसे लोग सेक्स कैसे करते होंगे यार? हाँ, मुझे सोचता हूँ ऐसे लोग सेक्स कैसे करते होंगे यार? या फिर ज्यादा करते हाँ, होंगे इसीलिए यू नेवर नो। नहीं नहीं। बेल बेल भी ऐसा ही था। हाँ, आई मीन बेल भी एक ऐसा ही बार था। आपको, Who was it? Stones at City? I mean John Stones, but he has found some consistency with his fitness. Hmm. Same with Thomas Partey Thomas at Partey. Arsenal. Yeah. When he was in Atletico Madrid, he was pulling up like 40-45 games per season. Mm. Hmm. Cut to he comes to Arsenal, and what he hasn't crossed 30 games per season. I think it all comes with basically age catching you up and you not doing the right things. Because when you're young, you are flexible, you recover quickly and stuff. But when you get a little older, when you're in like late 20s and stuff, or like early 30s, right, you need to do some stuff to stay fit. वो नहीं करते होंगे लगता है मुझे, मतलब that's what I feel at least about Hazard. And हजार्ड, एक और नाम तुमने ले लिया, हजार्ड। यार ये मेरे को तो याद भी नहीं कि चेल्सी के बाद इस बंदे ने कभी फुटबॉल खेला है। हाँ, मुझे भी हाँ, नहीं है, जब भी मैच भी देखता हूँ बस बैठा हाँ, रहता है, ही इज नॉट इवन कंसर्न्ड। जैसे काफी लोग बैठे रहते हैं बेंच पे हु आर लाइक स्ट्रेट अप वेटिंग टू गेट चांसेस, राइट? जैसे एसेंसियो वाज वन एग्जांपल दैट आई डिस्कस लास्ट वीक आल्सो। बट ही जब भी उसको मौका मिला था, इवन व्हेन ही वाज एट लाइक 60th मिनट और 70th मिनट, ही गेव हिज 100%।
he scored a couple, he gave an assist and stuff, and वो करता था उसके मतलब दिखता था कि भाई ये खेलना चाहता है. हम्म. That I'm not seeing from Hazard at all. जब भी आता पिच पे ही एक ऑलमोस्ट लाइक एक एक फॉर्मेलिटी है कि अच्छा ठीक है चलो हाँ इतना पैसे असिस्ट, मिल रहे हैं. या असिस्ट से पहले वाला प्री असिस्ट पास वगैरह दिया था, it didn't go हाँ. in, but just like cannot see the passion in him anymore. प्री असिस्ट तो इज अ शैम है. हाँ प्री असिस्ट तो वही. गोलकीपर भी कर सकता है. बट एक I गौतम, agree, I agree. Mm. the thing with Hazard, with players, so if you look at players like Robert Lewandowski, हाँ. he's 34, Mm. 33, 34. Mm. He's fit as a fiddle. Right, exactly. हाँ. वो बायर्न म्यूनिख का कौन सा प्लेयर है यार, थॉमस मूलर. हाँ, Oh, हाउ ओल्ड इज ही? he's very He's old. 28, 29 now. Yeah, 29, I हाँ. think. Yeah, हाँ, he's fit. हाँ. he's super fit. And if you look at some players, right, who have just maintained that consistency in their fitness, Sir, Muller and is they've taken 33. 33, imagine. 33, yeah. I thought he was in like a 32 or something. 33. अरे वो दिखने में ऐसा लगता है कि वो हाँ. बुढ़ा ही पैदा हुआ था. हाँ, उनमें से हाँ. एक बेचारा पैदा ही बोलते हैं, मामा जी हुए हैं. हाँ. तो बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि Hazard Hazard is waiting just for one more big transfer. I think he's like Philip Coutinho part two. Mm. He might come back to Premier League, but not to a top six club. Maybe he Where might is Coutinho right now? Aston Villa. I used to like him so much. Gosh, he was I, so good. I read somewhere that Eden Liverpool Hazard में. might go back to Aston Villa. God यार मतलब they are all who was that player? I forgot. Sanchez. वो कहाँ है? Alexis Sanchez. Sanchez. Yeah, Arsenal's. Alexis Sanchez, na? हाँ, Yeah, he's yeah, playing for yeah. Marseille. Hmm. हाँ. Just like I feel like these players had so much potential, and one bad transfer window or transfer decision has just like kept them like ruined their like at least 5 6 years of their beautiful career. Like This might Sanchez was so good at Arsenal. some really throwback memories you've brought back. I still remember that um, that January transfer window of 2018. Hmm. Early, yeah, and this entire window it was going on कि Sanchez रहेगा जाएगा ये करेगा वो करेगा. Then he was spotted having a haircut Hmm. in some very hi-fi salon in London. Hmm. तब वो पक्का हो गया कि लोगों ने बोल दिया कि यार बाल कटवा रहा है पक्का फोटो खिंचाने के लिए. हाँ. सो Shit, सैंचेज. मतलब the amount of मतलब मतलब कितना स्टॉक तो करते ही होंगे, हाँ. बट हाँ. कैसे वो कर सकते हैं यार, मतलब समझिए कि बाल कटवा रहे तो फोटो खिंचवाना यार, मतलब हो गया हाँ, ट्रांसफर. हो गया ट्रांसफर हो गया है. So Similar. Sanchez moved to Manchester United and Henrik Mkhitaryan moved to Hmm. Arsenal. Arsenal. I always felt so both these players, Mesut Ozil and Alexis Sanchez, both their Oh, contracts were up for renewal. that was player swap thingy, right? Mkhitaryan and Yes, Sanchez. Yeah. yes. Hmm. So Alexis Sanchez and Mesut Ozil both of their contracts were up for renewal. Hmm. Wenger chose Mesut Ozil over Alexis Sanchez, and Alexis Sanchez was like, "Fuck off, अब मैं Hmm. निकल रहा हूँ." Then he went to Manchester United, £500,000 a week for playing piano. He did, he did fuck all. Nothing, nothing. Yeah, from there he went Mourinho, to. Mourinho was Yeah, there, yeah, yeah, right? yeah. Yeah. Mourinho was there. Mm, From there, from Manchester United, he went to Inter Milan. He was injured in Inter Milan for some time. From Inter Milan, then he went back to Marseille. mm. And Sadness. हाँ, वो पूरा दुनिया ऐसे घूम के टाइम पास कर रहे हैं सब लोग. Yes, yes. Yeah, वो तो है, सही बात है. Coming back to this topic, right? I think every team is struggling right now. Do you think it is? I mean, it is definitely the schedule You that saw is the Chelsea happening. Brighton game. I saw the highlights. I haven't seen the actual So match. so I switched on the TV, okay, and I switched on. I turned on to Chelsea Brighton, and so then 2-0. Mm, And I thought, यार तो Brighton तो पेल दी. हाँ.
And then after, I think by halftime, or I was watching something else, and then when I Hmm. came back, it was like 4 goals. Like Hmm. Brighton, 4-1 चार था ना गोल टाइम मारा, में. 4, हाँ 4-1 था फाइनली. मैं बोला बहुत सही यार, मेरे को ब्राइटन जीतता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हाँ. चल आई जस्ट मतलब. फाइंड आई जस्ट फाइंड देयर प्लेयर्स क्यूट, देयर द एंटायर क्लब क्यूट, द एंटायर जर्सी क्यूट. वो पूरा ऑरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हैव यू कभी कभी very देखना जब very ब्राइट. positive, or even the stadium is also very हाँ, वो जब वो दे पैन आउट एंड दे शो द स्टेडियम. right. So Brighton, Southampton, Bournemouth are on the coast of England. Coast, yeah. हाँ. तो वो जैसे वो पैन आउट करके दिखाते हैं ना, इतना सुंदर लगता है ना. इट्स लाइक I इट्स agree. आउटसाइड द ब्राइटन सिटी, इट्स इन सम ग्रीन प्लेस. हाँ. तो Right. अपन जाएगा कभी ब्राइटन, चलते मैच हैं. देखेगा उधर एमेक्स चलते हैं स्टेडियम चलते हैं. में. लेट्स. मुझे भी जाना है यार, एक बार इंग्लिश ईपीएल का मैच देखने जाना है, फिर एक बार रियल मैड्रिड जाके, रियल मैड्रिड मतलब सैंटियागो बर्नाब्यू में देखना है. So वेरी. so what you'll have to do is you will have to plan your itinerary in such a way that uh, you attend like some really old school, uh, old school football ground and their home game. Just like if you go to London, go to Fulham's Craven Cottage. राइट. हाँ, एकदम छोटा स्टेडियम होता है. हाँ. देन यू गो टू दैट फक्कर्स टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम. देखने लायक है स्टेडियम, मानो चाहे मत मानो, या स्टेडियम अच्छा बनाया उन्होंने. हाँ. हाँ. या फिर गो टू आर्सेनल स्टेडियम. इसके अलावा और कुछ नहीं है लंदन में. हाँ. देन टेक अ ट्रिप टू मैड्रिड. स्टैमफोर्ड ब्रिज भी तो है, स्टैमफोर्ड ब्रिज अच्छा नहीं अबे है. स्टैमफोर्ड ब्रिज कौन जाएगा. वो लोग अपने वो गोरे गोरे को रेसिस्ट बोलते हैं. हाँ. अच्छा. हाँ. हाँ. तो तुमको याद है ग्रंज एक बार गया था चेल्सी स्टैमफोर्ड ब्रिज मैच देखने. गया था क्या? हाँ. हाँ. And he said that he felt so violated and so unsafe in the stadium, because everywhere there were just people being racist and anti-Semitic and doing all this Oh. homophobic and xenophobic chants all over. And Chelsea has always been that kind of a club. Yeah. Chelsea has always been anti-Semitic, racist. I mean, I've never experienced it firsthand because India में तो क्या ही है, इंडिया में हम सब रेसिस्ट है. इंडिया हाँ. में, हाँ. हाँ. वेरी हाँ. हाँ, डाइवर्स ओपनली रेसिज्म रेसिस्ट है. है. हाँ. हम. हाँ. इट्स पार्ट ऑफ आवर. अगर ये कोई इंटरनेशनल कोई सुन लेगा तो वो बोलेगा कि सही में इंडिया में सब रेसिस्ट है, लेकिन वो हमारा मतलब नहीं समझ पाएगा कि हम रेसिस्ट के मतलब क्या बोलते हैं. वी Yeah. आर ऑल ऑफ सेम रेस, इट्स जस्ट दैट स्किन टोन Yeah. चेंजेस. So हाँ. diverse that everybody can हाँ. pick on हाँ. anybody. हाँ. एक ही फैमिली में एक आदमी इतना काला होगा, वाला साले कालू कहेंगे. हाँ. और एक आदमी इतना गोरा होगा, उसको लोग इतना फैमिली गोरा में ही है. होता है, यस. इसको हाँ. कल परसों ही डिस्कस कर रहे थे हम ये. हाँ. uh, So and Spurs is a very Jew friendly club. hmm, So they've always had a lot of Jews in their board, in their supporter. So it's a very Jewish kind of a club. right. Same thing with Arsenal. थोड़ा Jewish connection ज्यादा है वहाँ पे. हाँ वो तो, हाँ. yeah, I agree. हाँ. Yeah, so yeah, I was saying like every club is struggling. Like last episode I said that we'll see Barca in like Europa, right? As soon as हमारा episode खत्म हुआ, I think Inter won the game and Yeah. Barca was out. Yeah. And सबसे बुरा तो डियोंग के लिए लगता है मुझे. He didn't take salary for like what, 2 years. 2 years? 2 years is He it? took I pay thought cut for 2 years. pay cut for 2 years, I think. And he said no to United. I think there was also one more club on the line, and उसको भी मना कर दिया उसने because he wanted to play Champions League. And he's back. That is उसको बेंच पे भी बैठा है, उसको खेलने का मौका भी नहीं दिया है हावी ने. तो he was just like on the bench waiting to play Champions League for no reason and back to Europa. Barca is struggling like that. And if you come to EPL, even I think like as I was saying, right, every team is struggling right now. Like Real Madrid was struggling. Liverpool are in in the league of their own. What do you think City is? City, Haaland has been like injured for like 2 weeks, and there are very few goals. I think like one goal in each game.
I don't remember the No, last week so क्या हुआ था. Man City drew against Dortmund. Riyad Mahrez missed a penalty. Yeah, Maris missed a penalty. उसके बाद लेस्टर सिटी वाले गेम में दे वन बाय हाँ, वन सिंगल गोल बाय डी ब्रुयने's फ्री किक. De Bruyne's free kick. Yes, oh, that was a crazy free kick. भाई मैं जितनी बार डी ब्रुयने का देखता हूँ ना खेलते हुए, यू नो, so I on Twitter I found a compilation of all the passes De Bruyne made for Raheem Sterling and Gabriel Jesus, Mm, huh, mm. which they missed, Missed. huh, and it was a 5 minute long clip. 5 minutes Imagine long. imagine the amount of chance. भाई वो कहाँ से his कैसे पास करता है यार बॉल. his और creativity is like out of the world. I mean, yeah, as we've said like on every episode almost. I यार don't think उसके आसपास भी कोई इतना creative midfielder नहीं है. Do you think यू he नो can be compared लास्ट, to the greats जो Scholes या फिर whoever was like who do you think is like the most, I mean, legends बिफोर आई who played like आंसर 15 years? बिफोर आई आंसर टू योर क्वेश्चन, उसके पहले जानते हो, Mm, डिब्रोइना के पहले मेरे को ना एक ही प्लेयर को ऐसे देख के लगता था इन रीसेंट हिस्ट्री, वाज uh, मेसूत ओजिल. यार I love तुम him. यार तुम बॉल के साथ क्या जादू करता था यार. हाँ, एंड सेम जो डिब्रोइना करता है. Mm, हाँ, मैं यू नो कभी कभी ऐसे फुटबॉलर्स के बारे में बात करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार, yeah. these people have graced the game, and we have had the opportunity to witness them in their Mm, prime. क्योंकि अभी at this point of time when someone talks about like Johan Cruyff, mm, or a Diego Maradona, we didn't see them play in flesh and blood. exactly. Yeah. I mean, neither have we seen KDB, but we have seen him seen him Mm, play live on TV, and we understand कि mm. what level What are he's they talking producing. about? Yeah. Yeah. Ozil was The magic at Real Madrid, sir. He was like भाई, magic. मतलब he he was was amazing at I Arsenal too, no doubt. वो अपना वो he continued his, and the year 2014 when Germany won the World Cup, Mm, that year he was sensational at Arsenal. mm, भाई वो तो uh, and he didn't ruin his legacy. He is still, I think, he is a very fond, he has a lot of fond memories at Arsenal, and Arsenal fans also, are mm. okay with it. Yeah. But coming back to your question, as can Kevin De Bruyne be one of the greats of the football? Obviously, he's one of the greats of the football. I Mm, think the rate at which he's going, I'm pretty sure, by the time our kids grow up, mm. they'll always have, like when Kevin De Bruyne was growing up, his idol was Ronaldinho. Right. Mm, Yeah. When our kids are growing up, or the new breed of footballers coming up, they'll say, कौन है idol? mm. KDB. De Bruyne. हाँ, KDB की तरह खेलना है. मेरे को नहीं लगता कोई ये नहीं बोले, कोई मेरे को नहीं लगता कोई ये बोले कि मेरे को हालैंड की तरह खेलना है. हाँ. हाँ, हाँ, ये सोचो. हाँ, लेकिन हर कोई बोलेगा मेरे को De Bruyne की तरह खेलना है, क्योंकि yeah. however crude fundamentalist you are, always you are attracted to flair, to to Right. to panache, to just halfway line से बहन जो बॉल मारा ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे डिफेंस के ऊपर से ऐसे कर्व करते हुए, तो विंगर के Yeah. पास बॉल जा रही है, वो देखने में मजा आता है. हाँ. Yeah. At least for me, I've always been like creation ka fan rather than like finishing ka. Yeah. Which like many people, of course, finishing isn't more on the matlab, of course he is the I singer see. of the band and all, matlab काफी मिल जाता है limelight. But I think these days, like not these days, matlab the nowadays, like you have many stats to track all the creativity, like chances created, uh XG. yeah, XG, like passes kitne अच्छे, matlab Yeah. dribbles completed, everything, right? These Yeah. metrics were not there in that time, so they were very like, I mean, तब नहीं थे जब like when Hmm. it was like previous generation. Nowadays, like you have everything to measure, so at least we get that um थोड़ा मिल जाता है I think, insights. coming back to your question of will Kevin De Bruyne be part of, Mm, those legends of Premier League? Uh, will he be spoken in the same breath as someone as किसको बोलूं मैं,
Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp is one of those elite level finesse footballers. Right. Huh? I still think yes, he has that capability. He has that that personality around him, and he has his game to prove. He plays in a very good Manchester City team. 101%. Yes. Kevin De Bruyne is one of the greatest of this game. I मैं तो उसका 100%. फैन हूँ यार. मैं तो कुछ कुछ so मेरा philosophy है, if you're playing for Arsenal, I follow you on Instagram. If you don't play for Arsenal, I don't follow you on Instagram. But there are a few players I always follow. I've been following for like Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. बाकी किसी को अर्लिंग हालैंड को इधर बीच फॉलो करना चालू किया. थोड़ा पागल जैसा लगता है तो मेरे को अच्छा लगता है उसका फुटबॉल. इसके अलावा और मैं और किसी फुटबॉलर को फॉलो नहीं करता. मैं सिटी का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, पेप का भी इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, but I think just KDB just amazes me every time he's on the pitch. Yeah, imagine KDB playing in a team which is like loitering around 10th to 11th, a mid-table team. Will he be able to produce the same quality? I think yes. 100%. It's conversion नहीं होगा. Conversion शायद नहीं होगा, but 100% chances तो create होंगे ही होंगे. Like it's like there are multiple like yeah, like 100%. Yeah, I was talking about that Barca versus Bayern match, right? Did you watch it? No, I I'm not wanted to watching any just Champions League game. I was watching थोड़ा side में रख के जो ध्यान नहीं दे रहा था, but I was just watching it. But I have only one line that I read somewhere, like Bayern owned Barca more than Spotify. Whether everybody be talking, ठीक है, they're out of the Champions League, but I didn't see a fight at all. मतलब मैं तो वैसे ही देख रहा था, but they didn't feel like they wanted to win or something. मतलब very lethargic. Aroना ने गिव अप मार दिया था. उनको पता था कि Yeah, इंटर पहले इंटर मार दिया. इंटर विक्टोरिया को पेल देगी. फिर यही है ना लालिगा, मतलब नाउ देयर कॉन्संट्रेटिंग ऑन लालिगा जीतेंगे. मतलब लालिगा का सीन यही है कि इट्स वेरी इट्स अ टू हॉर्स रेस. या इट्स टू एथलेटिको भी गया है, अभी सभी का भी गया है. इट्स वेरी लाइक ठीक है, वो सब मतलब आपस में ये जीत जाएंगे, फैंस भूल जाएंगे ऐसा. उनका वो है अभी कि यूरोपा जीतेंगे और ये जीतेंगे, मतलब कुछ हो जाएगा. द थिंग इज दे पुट और सो मच बार्सिलोना वाले मनी ऑन. वेलेंसिया सेविया आइबार जो भी दुनिया भर की टीम्स है ला लीगा में उनको पैसे दे देगी. हाँ देख हारने का है तुम लोग को. और अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोगों का नाम भी अपने स्टेडियम पे डाल देंगे. विल कॉल इट स्पॉटिफाई वेलेंसिया कैंप न्यू. हाँ, वन वीक द नेक्स्ट वीक विल कॉल इट स्पॉटिफाई सेविया कैंप न्यू. हाँ सर ये तो कहते हैं कि ठीक है, मतलब पीएल टीम्स आर मोर कॉम्पिटिटिव एंड स्टफ, मोर गुड एंड स्टफ, बट आई जेन्युइनली डोंट बिलीव दैट. मतलब पीएल इज मोर a faster game, so it is better to watch. You feel it's very competitive, but PLB it's when it has been like Liverpool City for the past 5-6 years at least. No, right? but the thing is the rest that of the clubs. If you watch so the thing is that the quality of players, right? The delta between a 10th place team in a PL and the 10th place team in a La Liga, 10th place team in Bundesliga, 10th place team in Liga. हाँ, अगर ये 4 टीम को देखोगे तो वो डेल्टा काफी ज्यादा है. हाँ, क्योंकि यार हर साल हर प्रीमियर लीग क्लब को 150 मिलियन मिलता है, 200 मिलियन मिलता है केवल टीवी राइट्स का. राइट. हाँ, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, वो अच्छे क्वालिटी के प्लेयर अरे ला यार सकते हैं. हाँ यार, जो क्लब 10th 11th फिनिश करती है वो भी साला 50 मिलियन पाउंड की साइनिंग करती है. 20 लोगों को प्लेयर करिए सर फॉरेस्ट ने. 20. हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट इसलिए खरीदा है क्योंकि वो लोग पिछले 3-4 साल से उन्होंने प्लेयर खरीदा नहीं था और वो लोग ऐसे मिक्स एंड मैच करके चला रहे थे. उनको पूरा अपने स्क्वाड रेनोवेट करने का मिल करना गया था. था. लेकिन मैं अगर बात करूं फॉर अ क्लब लाइक साउथहैम्पटन, हाँ, they are well capable enough to go and buy a 25-30 million pound player, right? unabashedly. But a similar club in La Liga
हाँ, रियल बेटिस यार, रियल बेटिस हेक्टर बेलरिन के लिए 4 मिलियन पाउंड देने को रो रही थी। हेक्टर बेलरिन के लिए 4 मिलियन पाउंड देने चार को। मिलियन वो, हाँ, वो चोमू अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ कैंसिल करा के जाके बार्सिलोना में बैठा है। हाँ, यानी कि बार्सिलोना का तो सब लोग चूस रहे हैं यार। यार वही है, मतलब फिर से मतलब हर टीम का लाइक क्या दे जरूरत है हैव दैट हेक्टर बेलरिन फेस। का उनको? बार्सिलोना का ट्रांसफर स्ट्रेटजी वाज प्रॉब्ली द वर्स्ट आई एवर सीन। जब से मैंने देखना चालू किया कुछ है, प्रॉब्ली द कुछ भी वर्स्ट ट्रांसफर करते सेंस। हैं। उसको लाए डेम्बले, टैलेंट जूल्स है कुंडे, बट यार जूल्स कुंडे अच्छा प्लेयर था, अब बार्सिलोना में आके हग रहा है। डेम्बले भी सर, मतलब हिज डिसीजन मेकिंग वाज सो ऑफ। मैं ज्यादा मैच देखता नहीं हूँ बारसा का, बट मैंने दो तीन देखा था। बट हिज डिसीजन मेकिंग वाज सो ऑफ। एंड Alonso was playing at CB for them. They already have this defensive issues, and I think 20 मिनट बाद शायद चेंज कर दिया उन्होंने. But the two initial goals, Mane was like ऐसे जा रहा था, मतलब Mane was just walking, just अकेला ही जा रहा है, गोल मार के आ गया, मतलब तब भी डिफेंडर आ नहीं रहे थे, ऐसे वाला सीन, ऐसे वाला लग रहा था मुझे. One more line I got was Barca, Atletico, Juventus, United all got the Super League of their own. या यार आर्सेनल भी है. फकर, Hmm. फकर्स। Barca's finances were a lot of dependent on them moving to going to Champions League, but I don't know वो क्या करेंगे. There is some kind of huge document that I saw that was on Twitter. कि अगर ये नहीं ट्विटर गए पे कुछ तो भी मिल जाता है ना। कुछ भी सही कुछ में. कुछ भी बना के कुछ भी दे देते हैं लोग यार, क्या करते हैं। सब मिल जाएगा. यार, you know the fun fact of the, I mean, we'll talk about, just remind me, okay, we'll talk about this at the end of the podcast. हम्म. It's a FPL fun fact. हम्म. अच्छा, अब मैं बोल दिया हूं तो मैं बोल ही देता हूँ। बोल ही दो. हम्म. There were two people who captained Reece Oh, Nelson, triple captain Reece Nelson. yes, I saw that. हाँ, And there were उसने just शायद two. ट्वीट किया ना कि who are they, I want हाँ, to give a t-shirt. yeah, give a t. There were two people who यार मैं प्लेयर को वो, जानता भी नहीं हूँ यार, मतलब लोग कैप्टन कैसे बना रहे हैं. तो I think the one guy who captained him, right? His his agenda was कि मैं जिस लीग में खेल रहा हूँ उस लीग उसका में मेरे को सबसे डिफरेंशियल. कम, उस लीग में मेरे को सबसे कम पॉइंट्स बनाने हैं। हम्म. तो उसमें ऐसा था कि तो जैसे जो हम कम चार पांच, पॉइंट्स जैसे बनाएगा. वो जीतेगा। हाँ, वो ओ लोग ये अच्छा आपस है में यार. बोला, हाँ, तो वो लोग जितने भी घटिया प्लेयर होते हैं ना, जिनको कोई नहीं पूछता, हाँ, हम्म. हाँ, उनको लेके आते हैं, अपना टीम में डाल देते हैं। हम्म. उस बंदे ने एक तो, मेरे को लगता है कि एक तो रीस नेल्सन खुद होगा, अपने आप को ट्रिपल कैप्टन कर दिया होगा। वो बता नहीं रहा है. हाँ, वो बता नहीं रहा है। नहीं हाँ, यार, एक नहीं का तो, बनाते होंगे, पता है, मतलब जैसे हम सोच रहे थे, मतलब इट वुड बी वेरी हार्ड. वो क्यों बना रहा होगा खुद को. नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को पता नहीं। हाँ, आ, लेकिन वो जो बंदा था, उसने उसने ट्रिपल कैप्टन किया था। हाँ, हम्म. एंड ही वाज डिसअपॉइंटेड, ही इज लाइक व्हाट द फक यार। इधर 19 पॉइंट्स आए थे शायद उसको. हाँ, so he had 2 goals, 1 assist in 70 minutes. हम्म. Gabriel Jesus had 3 assists in the game. 3 assists. Oh yeah, right. हाँ, I was so sad I took him out. हाँ, he had 3 assists. मैंने हालैंड को कैप्टन बनाया था। हाँ, हालैंड आपका खेला वाइस नहीं। कौन था? हेजूस। अरे सही यार, मेरा वाइस हाँ, फोर्डन था. साला फोर्डन हाँ, खेल क्यों नहीं रहा, पता नहीं पेप क्या करता है साला, अलग अपना एफपीएल चलाता है. नहीं, नहीं, खैर वो एफपीएल पे शुरू करेंगे तो आई माइट स्टार्ट रैंटिंग. इस एफपीएल पे मेरे को लगता है ना, वो फोर्डन को बोल के रखा है कि उन्होंने, देख, तेरा बहुत हो गया, अब तो थोड़ा आराम ऐसे ही कर। लगता है मुझे, जब वो प्लेयर हैट्रिक मार रहा है, दो तीन गोल मारा, फिर उसको बिठा देता है. हाँ, वो उड़ने लगता है वो। वही. यस. What else to discuss? यूनाइटेड We वर्सेस have वेस्ट हैम. वेस्ट हैम थ्रू भाई, वो एवरीथिंग रैश, एवरीथिंग एट De Gea. बिफोर वेस्ट हैम, वो रैशफोर्ड का गोल देखा था तुमने? यस. वो क्रिश्चियन एरिक्सन का क्या पास, इट वाज लाइक द सम, इट आयरन मैन इट इन मैनचेस्टर. एग्जैक्टली, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट ओल्ड स्कूल, वो बड़े बड़े स्ट्राइकर होते थे ना। हाँ, या. लाइक डंकन फर्गुसन ऑफ एवर्टन। हाँ, वो चार चार मील दूर से दौड़ के आ रहे हैं, बॉल हेड कर रहे हैं, बुलेट की तरह बॉल अंदर जा रहा है। हाँ, व्हाट अ गोल. मजा आ गया. बहुत अच्छा गोल था, बहुत अच्छा गोल था, लेकिन उसके बाद भी यूनाइटेड के खैर पास चांसेस मैच थे। मैच जितना people are talking about, oh United was so good, so good, so दे आर good, I नॉट think दैट they were गुड। like, that's what I think. Defense, हाँ, Martinez,
Maguire started after a long time, I think, because of हाँ, Varane is injured वर or लिंडलॉफ like को Lindelof injured. So Maguire started. I'd heard it he was okay. मतलब बेसिकली उसका बार अब नीचे हो गया है, तो लोग कह रहे हैं अरे मैगवायर ने अच्छा खेल लिया क्या. आई थिंक इट वाज मार्टिनेज, डाला एंड De Gea's game more than यार anybody else. दूसरे Eriksen too. पे दूसरे साइड पे कौन खेला था? लूक शॉ खेल रहा था। हाँ, लूक शॉ ने Sure. ज्यादा कुछ नहीं किया, बट डालो ने एक दो बहुत अच्छे क्लियरेंसेस Yeah, किए yeah, थे। yeah. Dallo had some और really good clearances. डेहया ने बहुत अच्छा, डेहया का गेम बहुत अच्छा था। डेहा ने बचा लिसांड्रो लिया सर, मार्टिनेज, मतलब they were like very very hard saves. लिसांड्रो मार्टिनेज यार अभी भी मेरे को लगता है ना कि ही स्टिल लैक्स सम पेस, Yeah, yeah, people thought बट about it, but मतलब वही है, he is making up with his other qualities right now at least. तो जब हाँ, I feel like these players are so passionate in like just playing for that club or like playing in that position or playing football in general, they'll make up for the lack of quality that they have. Just say defender being like 5'7" or something, like he has things to come over those things is what I feel. I I I I I agree to this, and I advocate this not only in football but in life as well. That Hmm. just कुछ find नहीं things है. to motivate yourselves. Yeah, exactly. Just find things to motivate yourself. अब Keep जैसे it going. मेरे but everything has a limit. I think in the Chelsea Man United game, वो लिसांड्रो मार्टिनेज और वो एंटनी, Hmm. वो लोग जॉर्जिनियो के ऊपर गैंग अप कर रहे थे। Hmm. Did you see the clip? Yeah, yeah, I saw that. Yes. सो लिसांड्रो मार्टिनेज ने जॉर्जिनियो को आगे से धक्का मारा, तो एंटनी ने पीछे से धक्का मारा। Hmm. मैं बोला अगर वो जो डियागो कोस्टा होता ना, पटक पकड़ के तुम लोगों ने थप्पड़ मारने लगता वहीं पे। हाँ, वो जॉर्जिनो वैसा वाला हाँ, इसीलिए. हाँ. वो जॉर्जिनियो है तो तुम लोग बोल पा रहे हो। हम्म. हाँ, उसके जब अगर डियागो कोस्टा होता ना, या और कौन सा प्लेयर है यार, वो हरामी पहले ही प्लेयर मार अगर, चुका था. पेपे रामोस. हाँ, पेपे रामोस जैसे प्लेयर होते ना, पेपे रामोस प्लेयर जैसे, उनके प्लेयर्स के साथ ये लोग ऐसा करते भी नहीं। ये कल के 20-21 साल के लौंडे। हाँ फट जाती है यार, हाँ, नहीं नहीं हो हाँ, पाते. पेपे आज भी खेलता है पोर्टो में। हाँ, हाँ, वही. इमेजिन क्या करियर है उसका यार। हम्म. अरे वो लॉस्ट अलग पेपे। लेवल या. न्यूकैसल, या न्यूकैसल का क्या चल रहा है? दे वन लास्ट 5 They out of fucked 6 Aston games. Villa. They screwed Aston Villa's Yeah, happiness. yeah. 4 goals to nil. मैंने मैच तो नहीं देखा, हाइलाइट्स देखा, बट Mm. न्यूकासल आर एक्चुअली बिकमिंग अ डील, अ गुड I अ heard गुड Pep फुटबॉलिंग साइड। saying, I heard, was it Pep? I don't know. Pep saying in the one of the press conferences, Newcastle are like title contenders. है वो चूतिया है वो। हाँ, वो कुछ भी बोलता है. वो आर्सेनल को भी बोलता है टाइटल कंटेंडर है। वो हाँ, आर्सेनल को ठीक है सर, एक बार को बोल सकते हैं कि ठीक है, देयर ऑन फर्स्ट टॉप ऑफ द टेबल एंड ऑल, एंड वो कह रहा था, वो यूनाइटेड को भी प्रेस कर रहा था. उसका हर प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस ऐसे ही होता है कि मतलब ज्यादा देखा नहीं मैंने, बट ही वाज सेइंग कि नहीं मैं, यूनाइटेड भी लाइक दे आर बैक. ही वाज सो, बट टेनहाग, आई थिंक टेनहाग का अच्छा लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. बोलता है इट्स वेरी फाइन ऑफ हिम टू से दैट, बट ऐसे कुछ नहीं है, मतलब वी आर लाइक राइट ऑन द पाथ ऑफ द नेक्स्ट गेम. अगर आर्सेनल के मैनेजर्स के अलावा अगर और किसी का अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता था, तो वो मोरिनियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता था। हाँ, रेस्पेक्ट. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। उसके बाद रोल योर उसके आर्स. बाद उसके बाद मैं कभी कभी छोटे छोटे क्लिप्स देखता हूँ यर्गन क्लॉप के, जब वो पागल हो जाता है। हाँ, 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 या क्लॉप तो और डिप्रेस्ड है यार बेचारा, उसकी शक्ल और देख के ऐसे पेप रोने वाली हालत हो गई है. और पेप का तो मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी वो क्या बोलता है, इतना तेज बोलता है। हम्म. यूनाइटेड है, आर्सेनल है। वेरी बैड इम्पर्सोनेशन, बट Yeah. अरे वो जानते हो, ही डज दिस टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम सिटी। सिटी. या ही जस्ट बिल्ड्स वो अप अदर टीम। फीफा में वो नहीं होता, ऑप्शन आता है फीफा मैनेजर खेलते हो तो हाउ डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू कॉन्फरेंस, लाइक प्रेज द टीम, हाँ, मोटिवेट द करेंट टीम, और लाइक काइंड ऑफ डीमोटिवेट द अदर टीम, ऐसे ऑप्शंस आते हैं. हम्म, मुझे लगता है वो हमेशा वो प्रेज ज्यादा टीम वाला करता होगा मैच से हाँ, पहले, और ताकि लोगों को ये बस लगता है ना, लोग ऐसे सोचे, दैट माइंडसेट. अब कल इलॉन मस्क आके तुमको बोले कि यार वामसी तुम क्या कोड लिखते हो यार, मजा आ गया है। हाँ, वही. हाँ, तुम आओ हम्म. ट्विटर में, तो तुम ब्लू टिक वाला फीचर बनाओ। हाँ, $20 वाला। हाँ, तुम आओ।
हम मैं पीआरडी लिखूंगा तुम बनाओ, तुम्हें हम्म। कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, राइट। हाँ। भले तुम जाके वहां पे तुम बैठ के, हाँ, तुम्हें गिटहब का एक्सेस ही नहीं, तुम्हें कोड का एक्सेस ही नहीं मिलेगा तुमको, राइट। हाँ। बैठे हो मुंह देख रहे हो। हाँ। तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, इट इज जस्ट बिल्डिंग यू अप सो हाई दैट यू कैन बी पुल डाउन। रैंडम प्राइज हैपेंस, ये मतलब इट्स हाँ वेरी मेंटालिटी है ये। पेप तब भी करता था when he and Mourinho were like fighting on the press conferences at Real and Barca. या, तब भी Mourinho तो वो तो अबे तब तो असली फाइस्टी हो रहा था, इट हाँ, वाज एक्चुअली लाइक वॉर। actually yeah, तब Like, what the times. hatred was so palpable. Hmm. You would actually feel it through the television screens. I want that Mourinho back in Premier League एक बार मतलब मजा आ जाएगा, मतलब अब there's नहीं good आएगा मेरे को amount of लगता time। है। नहीं आएगा, अब मेरे मुश्किल को ही नहीं है वैसे। लगता। यूनाइटेड सो वापस नहीं आएगा, यूनाइटेड तो आई थिंक टेन हैग So इज। he will not come to any of the big six clubs. He has already managed Chelsea, United, Spurs. बचे हम्म। कौन? लिवरपूल जाएगा नहीं, आर्सेनल आएगा नहीं, सिटी उसको बुलाएगी नहीं। सिटी हाँ, तो चांस नहीं है, आर्सेनल भी ठीक है। नो चांस, नो चांस। अगर अगर आर्सेनल हायर करेगी तो मैं साला बैंगलोर फ्लाइट पकड़ूंगा, लंदन जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ, ये मतलब स्पॉट, जितना भी वो अच्छा है, आई थिंक ही वाज लिटिल ही इज अ स्टिल डिसेंट लिटिल थोड़ा टॉक्सिक फॉर द टीम ओवरऑल। मतलब उसको उसके टाइप के प्लेयर चाहिए, वो ही कैन नॉट मैनेज एवरीबॉडी। या किसी का तो इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, माइकल बैलक ने बोला था हम्म। कि अगर आपको मरीनो जैसा मैनेजर चाहिए तो आप उसको हायर करो हम्म। और फिर उनको छोड़ दो, हम्म। और जो वो बोले बस करते जाओ, हम्म। वो 2 साल में आपको जिता के दे देगा। हम्म। अगर आपने अपना बुद्धि पेला उसके अंदर, हाँ, तो वो बोलेगा फक ऑफ, खत्म आई एम गोइंग। खत्म खत्म। 3 times हम्म। रेस्पेक्ट। हम्म। ऑल ऑफ द मैनेजर्स कंबाइंड। तो या न्यूकासल के बारे में कह रहा था, दे लॉस्ट ओनली वन गेम द होल सीजन अगेंस्ट लिवरपूल। अगेंस्ट लिवरपूल या। So yeah, it's like pretty good form. Almiron scored again, and Trippier. एल्मिरोन है So क्या तुम्हारे एफपीएल में? yes, लिया मैंने। मेरी फट रही थी उसके बिना, क्योंकि 5 गेम में, ओए 5 गेम में 5 गोल मारा यार उसने। मतलब ही शुड बी द हाँ, प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर इफ आई या एम लाइक। ही और इज, कोई आ गया क्या, कब आता है? या अभी आ जाएगा कुछ दिन में, ओके हाँ, एक दो बट दिन आई में थिंक आई ही थिंक। शुड बी द प्लेयर ऑफ द मंथ लाइक। एडी हाउ मैनेजर ऑफ द मंथ, या मिगेल एल्मिरोन प्लेयर ऑफ द मंथ। 100%। Yeah. One question, like we discussed about it. Where do you think is City standing up without Haaland? सेकंड प्लेस, फर्स्ट में आर्सेनल है, और ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे रहेगा ना, मतलब without हाँ, Haaland, because I saw the last 2 matches and वही chances create हो रहे हैं। Rodri had a few and Pep का rotation चल रहा था। Foden was not there, Silva was कोई भी मार देता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे सिटी में। बट yeah, मतलब I thought like goals नहीं होंगे, there might be few draws here and there, so yeah, I think I would देखो agree द with स्केड्यूल इज what you're टेकिंग, saying द at all. स्केड्यूल इज टेकिंग इट्स टोल ऑन ऑल द टीम्स। Exactly. चेल्सी प्लेड सो पुअरली बिकॉज यस, उनके प्लेयर्स थके हुए थे। Hmm. लिवरपूल का भी वही सीन है। कहीं Hmm. ना कहीं वो दिख जाता है। Hmm. और वो जब हारते हैं तो फिर लिवरपूल का उसका तो तो, मुझे लगता है कि इट इज देयर बोर्ड ओनर्स दैट दे आर रूइनिंग विदाउट ना, नॉट इन्वेस्टिंग नेसेसरली। इन अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज नहीं दिस नहीं, सीजन अगर वी अब न्यू लास्ट 2 सीजन की लिवरपूल जाने वाला है विदाउट न्यू साइनिंग्स। दे हैव ऑलवेज बीन इन्वेस्टिंग प्रॉपरली। दे बॉट 70 मिलियन के साथ के 2 स्ट्राइकर्स, लुइस डियाज और वो बट दुआ जहाँ लिपा। चाहिए वहां नहीं है ना सर। उनको मिडफील्ड मिडफील्डर खरीदना चाहिए था, उनको जूड हाँ बेलिंगम मिड खरीदना चाहिए था। हाँ मिडफील्डर नहीं है। हाँ, दे बट कुडंट जूड गेट बेलिंगम रियल चौमनी, मैड्रिड जाएगा, बेलिंगम मैड्रिड, और या फिर वो चौमनी आ सिटी नहीं जाएगा। पाया। हम्म। तो देखो, सिटी कितने तो लोगों को क्या करेंगे यार, 2 टीम बनाएंगे क्या सिटी? बना लेंगे, वो कैल्विन फिलिप्स को लोन कर देंगे, बोला जा तू वापस लीड्स। हाँ, Yeah. तो I feel Liverpool, like the owners didn't. I feel like Liverpool should be up for a bad season. Champions League में भी कितने आगे जाएंगे with that very low confidence ना, कितना आगे जाएंगे? Although I think the round 16 वगैरह maybe, मतलब it's very बट like develop होता है. Should see how it goes after the World Cup actually.
और मेरे को लगता है ना कि अगर अगर किसी भी हालत में अ, अगर किसी भी हालत में हम्म सिटी, अरे सिटी बोल रहा हूँ, लिवरपूल टॉप 6 में पहुंच जाती है, हम्म आई फील इट बी अ गुड सीजन फॉर देम. yeah, like I think it should. Yeah. And coming back to your question around City, City will win the league undoubtedly. Without Haaland too. या हम्म, दे, वो बिना हालैंड के एक दो मैच उनको लगेगा खेलने में, यानी कि फिगर आउट करने में हाँ। कि कैसे खेलना है बिना हम्म हालैंड के. हम्म या वो एक मैच, या एक मैच में उनको लगेगा उनको बिना हालैंड के कैसे खेलना, फिगर आउट कर लेंगे एंड दे हम्म विल बी बैक ऑन ट्रैक. आई, हम्म द काइंड ऑफ फुटबॉल सिटी प्लेज इज वेरी सोफिस्टिकेटेड. हाँ, और मेरे right. को कभी बहुत बोरिंग लगता है सिटी का फुटबॉल. तुम अगर हम्म मैच देखो ना सिटी का, हम्म बहुत 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 बोरिंग लगता है. हम्म अनलेस यू हैव अ टीम which is like slapping them right in their face, like what Liverpool does. हम्म हम्म. अदर देन दैट, सिटी सिटी के गेम अगर तुम लगा लो ना, हम्म तो तुम कभी भी लगा लो, अगर लेट नाइट मैच है तुम्हें नींद आ जाएगा. हम्म हाँ, अर्ली इवनिंग मैच है तभी तुमको नींद आ जाएगा. हाँ, हम्म अगर 8:30 नाइट का, 8 साढ़े 8 का किक ऑफ है हम्म इंडिया टाइम, हम्म हाँ एकदम प्राइम टाइम, डिनर हम्म टाइम, तुम्हें नींद आ जाएगा. हाँ. सिटी के मैच तो स्टार्टिंग, फास्ट ही होते हैं यार, मतलब दे स्कोर गोल्स या फिर होता रहता है, बट आई प्रॉब्लम थिंक क्या यू आर होता है ना बोर्ड कि, ऑफ दैट. नहीं प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सिटी के पास बॉल होती है. हम्म हाँ, सिटी आपस में ही पासेस करते रहते हैं. हम्म हाँ, और ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ तो उनका बहुत ही मेथोडिकल अप्रोच होता है अटैक करने का. हाँ. हाँ, और दूसरी टीम के पास बॉल नहीं जाता, दूसरी टीम ऐसे भी डर डर के खेलती है. टेक द हम्म, बॉल, पास द बॉल. हाँ. पेप पेप बॉल. लिवरपूल के साथ अगर तुम देखोगे, हाँ लिवरपूल एकदम रॉक एंड, हाँ रॉक एंड रोल फुटबॉल खेलती है एकदम, पूरा पता नहीं क्या टीम कर एक. रहे थे यार इस नहीं गेम नहीं, में. ओवर द पास्ट 5 years व्हाट आई एम सेइंग, हम्म पूरी टीम एक साथ पीछे आती है, एक साथ ओ ऊपर अच्छा. जाती है. हाँ, देयर प्रेस, काउंटर प्रेस, देयर ट्रांजिशंस, देयर शूट्स. एंड Sadio Mane is the हम्म reason why Liverpool is doing so bad. Take this from me. I mean, most of Liverpool fans would agree. हम्म but he is doing really good at Bayern. I was watching that match. वो जिनाब्री और ये were like leading the attack. चौपामेटिंग है ना, चौपामेटिंग स्कोर कर रहा Promoting, है. हाँ. चौपामेटिंग स्कोर कर रहा है, मतलब चल रहा है कुछ उनका, कुछ मतलब. कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जैसे ये अल्वारो मोराटा, चूपा मोटिंग, हाँ हम्म ये जेरोम बोटैंग. हम्म हाँ, इनको पता नहीं मोराटा. कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं. मोराटा हाँ तो चुप. मतलब ऑलमोस्ट हर हर टीम के लिए खेला है क्या उसने. हाँ हाँ, एटलेटिको के लिए यूवेंटस खेला है, खेला, एटलेटिको यूवेंटस मैड्रिड खेला, खेला. रियल मैड्रिड खेला है, नहीं हाँ ना. खेला है ना. खेला हाँ, है खेला चेल्सी है. खेला है. चेल्सी. हाँ, अभी कहाँ है, यूवेंटस में ही है वो. कहीं होगा यार ऐसी किसी क्लब में, उसको मेरे को पता भी मतलब नहीं है. मिल जाता है यार उसको सही में. हाँ. बट दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट the time I knew Valverde would be a great player in क्या नाम है, in Real Madrid. When Valverde pulls Morata and throws him to the down ground for red card, Real Madrid versus Atletico match में, that was a time that he's ready to give everything for this club. मतलब मजा आ गया. He was very like डाल दिया उसको नीचे और चला गया. He knew it was a red card. जा रहा बाहर. Even Simeone was appreciates him on his way back. मतलब मजा आ गया था. That is like very. मोराटा से मुझे वो सबसे अच्छा मेमोरी है उसका. मोराटा. Yeah, one more question before we wrap it up. Who do you think is the overrated player right now in EPL? ओवररेटेड. सोच लेना मेरे को. Overrated. ओवररेटेड. ओवररेटेड. मैन सिटी, न्यूकासल, टॉटनहम हॉटस्पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड. ओवररेटेड. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. रोनाल्डो तो ठीक है, मतलब रोनाल्डो का सबका पता ही है कि व्हाट वेयर ही इज राइट नाउ एंड ऑल. वैसे बट मतलब अप बट ये इफ यू आई टॉकिंग थिंक अबाउट अप एंड कमिंग, आई थिंक ग्रेलिश वुड बी अ गुड
नहीं, ग्रिलिश कंपटीशन। का सबको पता चल गया है, अब कोई इसको रेट नहीं करता। वो खुद हाँ, को नहीं करेगा। ही इज नो लॉन्गर ओवर इट, ही इज नो लॉन्गर रेटेड टू बी ओवर रेटेड। रेटेड। शिट। हाँ। मैं सोचा था ग्रिलिश के नाम लेंगे, आपने तो ना ना, बताया। But मैं that अगर comment बोलूं, against Almiron like fired इट बिट back. हिज एस। Almiron का देखा आपने reply on this thing on one of the I think post match conferences. हाँ, सम He said पैरागुएन। that हाँ, yeah, he said that he आई has ही more फेल्ट hairbands बैड। than goals. या, आई थिंक इट वाज अ स्पूफ। Spoof ना, लाइक मुझे भी लग रहा था, ही देख देखा वो मैंने। वो वॉइस ओवर कोई करता है ना, उनको हाँ पता है हाँ घंटा अपने को स्पेनिश तो समझ में आता नहीं है। हाँ। हाँ, पता नहीं, उनके मैंने भी सबटाइटल कुछ भी सबटाइटल्स लिखते ही हैं। पढ़ा है। हाँ, बट आई फेल्ट इट वाज वेरी लाइक, अगर वो सच होता तो इट वुड हैव बीन लाइक सच अ सैवेज हाँ, रिप्लाई। वो अभी तक आग लग गया होता, अभी तक मालूम चल गया होता, वो किसी ने ऐसे ही क्या। बट अगर ओवररेटेड प्लेयर की बात करें, आर्सेनल का बता दो कोई। आर्सेनल नहीं यार, आर्सेनल में सब ठीक ठाक प्लेयर हैं। हम्म, यार मेरे को नहीं चमक रहा है यार, कौन है, एक मिनट में टीम्स देखता हूँ तब मेरे को समझ में आएगा। हम्म, तब तक तुम भी सोचो। सोच रहा हूँ। मैं तो एक्चुअली ग्रिलिश सोच रहा था, वही आया था दिमाग में बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दैट सिटी हैज स्पेंट एंड कितना सोचा था कि ही वुड ब्लेंड इनटू द टीम एंड ऑल सिटी में। ओवररेटेड हो था मार्क कुकरेया। ओ कुकरेया। वाज ही इवन गुड? मैंने देखा नहीं उसको कभी खेलते हुए। नहीं नहीं, ही वाज गुड। हाँ, बट ही वाज वो वन नॉट ऑफ द दैट गुड टू ब्लडी गेट 65 मिलियन पाउंड ट्रांसफर टू चेल्सी। 65। हाँ, ओ टू भाई। फकिंग लेफ्ट बैक। ही हैड वन गुड सीजन। हाँ, ही मूव टू चेल्सी, वो हग रहा है वहां पे। राइट। ओ वन मोर फन फैक्ट, टोनी क्रूज गॉट हिज फर्स्ट रेड कार्ड। रेड कार्ड इन 700 गेम्स आई गेस। या इमेजिन, या, वो भी फर्स्ट रेड कार्ड मतलब, रामोस तो सीजन में एक दो लेके बैठता था। रामोस बोलता फर्स्ट टाइम, ग्रेनिट जाका बोलता है फर्स्ट टाइम। Like it was a double yellow. Match was again, I was talking about it, almost the same lines like super fatigue. Girona were in like relegation zone वाला team. हम्म रियल मैड्रिड के साथ होता ही है हर सीजन, when they're on top they'll थोड़ा आराम से चिल मार के खेलते हैं, and ये relegation वाली टीम जो या फिर जो प्रमोट होती है टीम, वो हम्म ऐसे थोड़ा आके मार के चली जाती है मैड्रिड की। तो every lot of injuries like Benzema might be out actually for more हाँ time. And the thing is इस बार uh, Asensio started and हाँ he was actually doing really well. So I'm actually positive that if we have a couple of injuries in the starting क्या बोलते हैं starting lineup, like the front three or four, so Asensio is like good to fill it. So हाँ, वो चल रहा है Madrid में. And VAR again there was a stupid penalty. वो बेसिकली उसकी शक्ल पे आ रही थी बॉल, शक्ल या फिर चेस्ट पे आ रही थी बॉल, तो उसके किसकी हाथ शक्ल पे? एसेंसियो के शक्ल पे। अच्छा, हाँ हाँ, वो मैंने देखा है, हाँ हाँ, याद हाँ है मेरे तो को। वो हाथ उसका यहाँ हाँ। था, तो उसको वो लगा भी नहीं था, मतलब पता नहीं, हम्म अब वार का पता नहीं चलता, आई डोंट नो हाउ दे टेक द हम्म डिसीजन। तो समटाइम्स दे से इट्स ओके इफ द हैंड इज ऑन द बॉडी, पता नहीं, हर बारी की तरह ही दिस लॉट ऑफ वो कंट्रोवर्सी। नया रूल्स उनका बन जाता है, हाँ वो तो अडेप्टेबल रूल्स है उनका। Ancelotti was fuming हाँ after the match that nahi, it was not supposed to be a penalty, it was supposed to be a win. And yeah, that fatigue is like we can see in players like Vinicius, although he scored, he had one of the worst games of the seasons because I think he was a constant starter for like long. In October mein, they played 9 matches in a month. yeah 9 or yeah 10 matches, it's a lot. No, I think the maximum amount of matches was played by, yeah, I mean, like, most of the team played 9 matches. Mm, Most of the yeah. team played 9 matches. Mm, All the top teams who were playing in Europe played 9 matches. right. It's very Played like you exactly. It was a killing so schedule. much. Yeah. Uh, पता नहीं कैसे खेल रहे थे लोग, and these players like should respect them. Although इतना पैसा मिलता है और क्या, but still. हम्म अरे स्टेट ऑफ द आर्ट उनका रिकवरी टेक्निक होता है यार, वो वही मतलब, हाँ कितना भी हाँ, हम बोले खेल मतलब क्या। खेल के गए इमीडिएटली आइस बात। हाँ, दो दो मसाज करने वाले हैं, वो ऊपर नीचे एकदम लगे वही पड़े हैं। हाँ एग्जैक्टली हर जगह से उनको मिल रहा है सब कुछ, तो फिर हाँ। क्या क्या टेंशन लेना। हम्म
All right. चलो फिर चलो. रैप करते हैं. Let's Yep. catch up next week with more interesting topics. All right. Yep. Thank you, everyone. Bye bye. Bye bye.